Good afternoon, everybody. This is Shalvi from Lincoln Prime TV, and I'm here with today's latest news headlines. Some international news. Prime Minister Modi was awarded the Order of St. Andrew the Apostle for his extraordinary work for the progress of bilateral relations between Russia and India. PM Modi expressed his gratitude to President Putin for this. Now, some national news. Mihir Shah, the prime accused in the BMW hit-and-run case, has been arrested. Shah allegedly drove the luxury car under the influence of alcohol. He hit a two-wheeler in Mumbai's Worli, killing a 45-year-old woman and injuring her husband. Shah is the son of Rajesh Shah, a leader of Chief Minister Eknath Shinde's Shiv Sena faction. He was absconding since the accident that took place at 5:30 am on Sunday. From Sports World, Board of Control for Cricket in India (BCCI) Secretary Jay Shah has announced the new head coach of the Indian team. Former Indian opener Gautam Gambhir will be the new head coach of Team India. He will replace Rahul Dravid. Dravid's tenure ended as soon as Team India became the T20 World Cup 2024 champion. Now some local happenings. After hockey player Savita Punia, Bhajan Kaur is the second woman from Sirsa district who will represent the country in the Olympics. She will showcase her talent in archery. Let's know our weather report. The weather in Sirsa today is partly cloudy with a humidity of 56% and maximum temperature is 39 degrees Celsius and minimum temperature is 30 degrees Celsius. Now some Goenka news. Grade 10 students visited Prayas School as part of ongoing school activity. Sharing is caring, teaching kindness and generosity values through interactive initiatives. Now over to Hindi news. नमस्कार, मैं सुखलीन स्वागत करता हूं आप सबका हिंदी न्यूज के साथ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए असाधारण कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल सम्मान दिया गया। पीएम मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त किया। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। BMW हिट एंड रन मामले का मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह ने कथित तौर पर शराब के नशे में लग्जरी कार चलाई। उसने कार से मुंबई की वलरी में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, जिससे 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। शाह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के नेता राजेश शाह का बेटा है। वह रविवार सुबह 5:30 बजे हुई दुर्घटना के बाद से फरार था। अब बारी खेल जगत की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव जय शाह ने भारतीय टीम के नए मुख्य कोच का ऐलान कर दिया है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। वे राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। द्रविड़ का कार्यकाल टीम इंडिया के T20 विश्व कप 2024 चैंपियन बनते ही समाप्त हो गया। आओ जाने को स्थानीय हलचल। हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया के बाद भजन कौर सिरसा जिले से दूसरी महिला हैं जो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह तीरंदाजी में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। मौसम का हाल इस प्रकार है। सिरसा में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ 56% नमी रहेगी तथा अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गोइंकन समाचार। GD गोइंका सिरसा के 10वीं कक्षा के छात्र ने शेयरिंग इज केयरिंग कार्यक्रम के तहत प्रयास स्कूल का दौरा किया, जिससे छात्रों को सहानुभूति और दानशीलता के महत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੋਇੰਕਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਲਈ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸੈਂਟ ਐਂਡਰਿਊ ਅਪੋਸਟਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। BMW ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਰਲੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
शाह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ਦੇ शिव सेना ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਡ੍ਰੈਵਿਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਡ੍ਰੈਵਿਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਲਚਲ। ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਜਨ ਕੌਰ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜੋ 올림픽 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 56% ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਕਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। नमस्कार। अहम् आना अस्मि संस्कृत समाचारे अंतर्राष्ट्रीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी इतस्मै रूस भारतयोः द्विपक्षीय सम्बन्धस्य प्रगतेः कृते असाधारणेनकारस्य कृते सेंट एंड्रयू अपोस्तलस्य आदेशः इति सम्मानः दत्तः। अस्य कृते PM मोदी राष्ट्रपति पुतिन धन्यवादं दत्तवान्। राष्ट्रीयवार्ताः। BMW हिट एंड रन प्रकरणस्य मुख्य आरोपी मिहिर शाह गृहीतः अस्ति। शाह मद्यपानेन विलासिनीकरां चलितवान् इति कथ्यते। सः चालयति स्म यत् कारं मुम्बईनगरस्य वोर्लीनगरे द्विचक्रिकायाः वाहनस्य आघातेन 45 वर्षीयाः महिलाः मृत्युः अभवत्। तस्याः पतिः अपि घातितः अभवत्। क्रीडाजगतः वार्ता अस्ति। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रणमण्डलस्य सचिवः जयशाह भारतीयदलस्य नूतनस्य मुख्यप्रशिक्षकस्य घोषणां कृतवान्। पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीरः टीम इंडिया इत्यस्य नूतनः मुख्यप्रशिक्षकः भविष्यति। सः राहुल द्रविडस्य स्थाने भविष्यति। द्रविडस्य कार्यकालः समाप्तः यतः टीम इंडिया T20 विश्वकप 2024 विजेता अभवत्। स्थानीयकार्यं पश्यामः। भजन कौर हॉकी क्रीडिका सविता पूनिया इत्यस्य पञ्चायत् सिरसा मण्डलस्य द्वितीया महिला अस्ति या ओलम्पिक क्रीडायां देशस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यति। सा धनुर्विद्यायां स्वप्रतिभां दर्शयिष्यति। मौसम एवं अस्ति। सिरसा अद्य आंशिक रूपेण मेघयुक्तं भविष्यति। 56 आर्द्रता च। अधिकतम तापमानं 39 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानं 30 डिग्री सेल्सियस भविष्यति इति अपेक्षा अस्ति। विद्यालयस्य वार्ताः। GD गोयिङ्का सिरसा इत्यस्य 10मा कक्षायाः छात्राः शेयरिंग इज केयरिंग इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रयस्य विद्यालयं गतवन्तः। येन छात्राः सहानुभूतेः दानस्य च महत्वस्य विषये ज्ञानं प्राप्तुं साहाय्यं कृतवन्तः। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।